Good morning students, my name is SUVAS VORA, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So, start with the new topic. We will learn about the last topic. In the last topic, we can see the GPS systems, how to use the disasters management. So, disaster management and the remote sensing. So we can see that the first Earth resources satellite is launched in the 1972 and the name is the Landsat 1, which is used for the different analysis or sensing the disasters. So the different satellite and the sensors can be provided the unique informations about the properties of the surface of the Earth. यानी कि अलग अलग सैटेलाइट डिफरेंट सैटेलाइट यूज़ होते हैं डिफरेंट डिज़ास्टर्स के लिए, जैसे कि अर्थक्वेक है या रिमोट सेंसिंग डेटा यूज़ होता है कि अर्थक्वेक आया है या सुनामी है, उसकी लेंथ कितनी होगी, कहाँ से जाएगा, किस पे इफ़ेक्ट होगा, वो सब कुछ सैटेलाइट थ्रू हो सकता है. नाउ द स्टार्ट विद द फ्लूड. सो अकॉर्डिंग टू द फेडरल emergency management agencies of the USA, he says that the floods are the common and the widespread of all the natural disasters today. So USA में जब फ्लूड्स हुआ था तब अप्रॉक्सीमेटली 225 पीपल यानी कि 225 लोग मरे थे और अप्रॉक्सीमेटली $3.5 बिलियन का नुकसान हुआ था. सो सैटेलाइट गिव द इमेजिनरी कैन वेरी इफेक्टिव फॉर द फूड मैनेजमेंट इन द सम वेज. द डिटेलिंग मैपिंग यानी कि डिटेलिंग मैपिंग में क्या होगा कि किस तरह से पूरी तरह से मैपिंग होगा कि हाउ टू मैनेज द ऑल फ्लूड and how to effect, then how to distribute and everything. Then developing the large scale views of the general flood situations. अगर large scale में requirement है और डेवलपिंग की ज़रूरत है तो किस तरह से होगा, उसका मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं. Then monitoring the land, use the cover change over the year or to quality permanent change in the land. जैसे ही हमको पता है कि कई लोग ऐसा कहते हैं नाउअडेज कि बोल देते हैं कि चलो सूखा पड़ा है या फ्लूड की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, तो सैटेलाइट थ्रू वो लैंड की पूरी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उस बेसिस पे हम वो समझ सकते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है. सो असेसमेंट ऑफ द फ्लूड डैमेजेस. So for the remote sensing, the damage the assessment is the most delicate work since it involves the rescue operations and the safety of the people and properties. So damage to the building and the infrastructure are analysis. Then how to flood management is using the GIS and RS including. GIS is the geological systems for the sensor है. Now according to the 3D data like the remote sensor data, अब 3D data से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से फ्लूड आएगा, किस तरह से कौन सी अफेक्ट होगा, किस तरह से होगा. तो इसीलिए वो मिटिगेशंस करने के लिए डेटा की रिक्वायरमेंट रहेगी. दैन कलेक्टिंग द नॉन 3D डेटा. अगर जो नॉन 3D डेटा है उसका यूटिलाइज करके हम बहुत अलग अलग जगह पे उसका इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं, सो दैट द इमेज टेकन आफ्टर द फ्लूड हैज़ रिड्यूस इट यूजफुल इन द असेसमेंट डैमेज टू बिल्डिंग एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर्स. सो ये डेटा का यूज़ करके हम जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है या बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बचा सकते हैं. नाउ ड्रॉट. सो द ड्रॉट इज रिफर द वाटर स्टोरेज डिजास्टर्स एंड दिस डिजास्टर इन इंडिया इज द मोस्ट कॉमनली डिजास्टर्स. So it is the water related natural disaster which affect the wide range of the environment
factors and the activities related. So the drugs can be classified into the meteorological, hydrological and agriculture drug. मेट्रोलॉजिकल ड्रग्स हो सकता है या हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर हो सकता है या एग्रीकल्चर ड्रग डिजास्टर्स हो सकता है. So these disaster management activities can be grouped into the three major phases. The first one is the preparedness, preventions and response. तो अगर प्रिपेयर्डनेस की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें प्रिडिक्ट करना पड़ता है और रिस्क जोन आइडेंटिफिकेशन, यानी कि प्रिपेयर्डनेस में कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट करनी पड़ती है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें रिस्क लेनी पड़ती है कि जैसे कि मनी मैटर्स है तो रिस्क लेना पड़ता है कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं आगे. जैसे कि अभी की मैं बात करूँ तो कोरोना को किस तरह से कंट्रोल करेंगे उसका एक अंदाज करके, जैसे ही हमने प्रेडिक्ट किया था कि ये चीज़ करने से कम हो जाएगा, फिर रिस्क लिया, देन धीमे जैसे जैसे अनलॉक करते गए तो वो एक टाइप का रिस्क लिया प्रिपेयर्डनेस के लिए. देन आफ्टर द प्रिवेंशंस, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, देन प्रिपरेशंस ऑफ द कंटीजेंसी प्लान्स एंड मॉनिटरिंग. तो अभी की जो सिचुएशंस है तो हमको वार्निंग दी थी कि किस तरह से आपको गाइडलाइन दी थी कि किस तरह से आपको अभी बिहेव करना है. देन प्रिपरेशंस, कौन की चीज़ आपको प्रिपेयर करके प्लान करनी है, और कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते हैं कि भाई जो कोरोना बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है. सो उसकी रिस्पॉन्स लेना पड़ता है. सो डैमेज assessment and the relief management. So the DROUGHT predict using the GIS system. So the remote sensing study the preparing the DROUGHT, the snowpack, then determine irregular circulations pattern in the oceans and atmospheres, then initial soil moistures. So the present state of the remotely sense the data for the DROUGHT monitoring and early warning system is based on the rainfall monitoring, surface temperature estimations and the soil moisture estimations. Now the earthquake की बात करूँ तो earthquake में मिटिगेशंस हो सकता है कि बिल्डिंग स्टॉक असेसमेंट होना चाहिए, देन द डिजास्टर मैपिंग होना चाहिए. प्रिपेयर्डनेस की बात करूँ तो मेजरिंग द स्ट्रेन accumulations, then रेस्क्यू की बात करूँ तो प्लानिंग द रूट फॉर द सर्च एंड रेस्क्यू, डैमेज असेसमेंट, दैन इवैक्यूएशंस प्लानिंग, देन डिफेंस इंफॉर्मेशंस मैपिंग, देन रिकवरी की बात करूँ तो डैमेज द असेसमेंट, आइडेंटिफाई द साइट्स फॉर द रिहेबिलाइजेशंस. एंड सैटेलाइट की बात करूँ तो हियर आई मेंशन दी सम सैटेलाइट्स नेम्स. सो दीज आर दी how to calculate the effects of the earthquakes. Now the tsunami are the water waves or the seismic wave cause the large scale sudden movement of the sea floors. Tsunami generally sudden changing in water, जो oceans है उसमें sudden change होने की वजह से tsunami का होती है. तो हाउ टू डिटेक्ट दी सुनामीज. सो फर्स्ट वन इज द सेस्मोमीटर्स, जो हम ऑलरेडी अर्थक्वेक के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि सुनामी जनरेट होने में एक रीज़न अर्थक्वेक भी है. अर्थक्वेक की वजह से सुनामी भी आ सकता है. अगर अर्थक्वेक का एपिक सेंटर जो ओशंस के अंदर है तो बट ऑब्वियस है सुनामी होगी और होगी. देन आफ्टर द कोस्टल टाइडल गेज and the deep ocean assessment and reporting of the tsunami, the name is the DROUGHT. So the seismometers, we know that as the discussed in the earthquake as well as in the last lectures. Then after the coastal tidal gauge में क्या होता है कि we can continuously measure the tidal heights and low tidals and the fluctuations of the tidals. So the maximum fluctuations of the tidal height, this is called the tidal gauge disabled. Now the DROUGHT system is the one sensor is
putting in the oceans. This is given the data sent to the hydrophones, and this data is collect from the sensors, and this is given to the transmit the data from the satellite, and that satellite is also transmit the data for the early warning stations. These are the system is called the DROUGHT. The simple form, you can see the figures using the GPS system. You can see here is the GPS system. So these are the working of the deep ocean assessment and the reporting of tsunami DROUGHT system. So in the last lectures we can see this. Now the today's lectures is Geographic Information System, GIS. So GIS means is the computer based system which collect and store the specially reference data with their attributes and the enable usage of the multiple analysis and the display in the situations form. So geographic information system store and analysis and visualizations data from the photographic positions on the earth surface. So the GIS is the computer based tool that explains the spatial relationship pattern and the trends of the situations. So by connecting the geographic with the data, the GIS better understand the data using the geographic context. हम जानते हैं कि जो डेटा हम पढ़ के कैलकुलेट करते हैं उससे ज़्यादा अगर वो पूरी तरह से रिप्रेजेंट हो 3D फॉर्म में तो इजीली हमको अंडरस्टैंड रहता है. सो द 4 मेन ideas of the geographic information systems is the create the geographical data, then magnitude data, manage it in a database, then analysis and the find pattern and visualize it in maps. So you can see that the different layers of the ideas of representations of the GIS. So GIS is applicable in the different surfaces or different systems. So the GIS is first one is the data is collect from the housing populations, then geologic and topologic data. Then after the GIS also given the ground truth, means the imaginary and the aerial photographs, then also response recovery situations, stability, then populations at the risk, then estimated damage infrastructures and resources, then event like the earthquake, flood, cyclone, landslide and others disasters are arise, also given the data from the GIS, and communications links for the internet and the satellite. So these all systems are connecting with the GIS systems. Now the applications of the GIS at the different stage of the disaster management. The first one is preventing or planning. So using of the GIS, the officials and pinpoint disaster and being to evaluate the consequence of the potential disasters. The disaster map can be prepared and the developing the project can be planned based on the hazards map to minimize the risk. यानी कि प्रिवेंशंस की वजह से, प्लानिंग की वजह से GIS सिस्टम के यूज़ करके हम डिजास्टर रिड्यूस कर सकते हैं. Then after the mitigations, so based on the topographic features, the GIS can identify the likely path of the floods. It will help the evocations of the area, and the GIS can identify the certain type of the soil in the earthquake impact in zones. Then after the preparedness, so the planning and evacuations route, then movement of the fault plane can be
monitored and the monitoring of the reservoirs level. So we can use the preparedness for GIS systems. Then response. So GIS can identify the location of disasters and also give the informations about the area affected. Then recovery. So with the help of the GIS, it is useful to search and the rescue operations and also provide the damage informations for the disasters and the number of shuttle needed and where they should be located. So GIS application is how to mitigations easy way and mapping of the management for the disasters is arise. Now the National Disaster Communications Network. The aim of the estimating of National Disaster Communications Network is to create the digitalized, converged, adequate, then relief, responsibility and others technologies based communications and the IT network with the desired NDMIS capability in support of the disasters. So we can, using the GIS system, satellite system, we can national EOC system is applicable. EOC means the emergency operation centers, जो दोनों डेटा सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है. These are also using of the STMA system. Then after the DDMA systems, then blocks, and also help the CSS applications and villages data. So the other network is useful, the three all data, STMA, then DDMA and blocks systems. This one is also disaster site. MEEOC means the mobile emergency operations system, and also the IDRF is applicable. So the non-structural mitigations की बात अगर मैं करता हूँ, so first one is the legal frameworks. So non-structural is applicable for the general speaking existing in the disaster related legislation stands not place enough on the mitigations, यानी कि legal framework is only established in the review of the such legislations. Then after the incentives can open the provide better inducement for the mitigation than the legal impositions, यानी कि गवर्नमेंट जो ग्रांट देगी which help the resource the commercials and other institutional to include the mitigations of the measurement in their building or reconstructions of the activities. Then training and educations. The mitigations where we be useful or successful is the required must be wide known about and understood that. So therefore there is the need to train and educate all those involved including the disaster management. हम जानते हैं कि अगर जब भी डिज़ास्टर होता है तो वो उसकी अगर ट्रेनिंग या एजुकेशन दी गई हो तो हाउ टू रेस्क्यू द ऑल पीपल्स इन दी सिस्टम्स where the disaster is arise. Then public awareness. So in addition to general awareness and the particular areas of the public involvement are necessary for the effective implementation of the mitigation program. Then institutional building. The strengthening of the countries or communities social structures can be enhanced disaster mitigation capacity, यानी कि जो डिज़ास्टर जब अराइज होता है तो जो बिल्डिंग्स यानी कि कम्युनिटीज़ है और जो कंट्रीज़ है
जो सोशल स्ट्रक्चर के साथ हम कंसिडर करते हैं वो मिटिगेशंस के लिए यूज़ हो. देन वार्निंग सिस्टम, एज वी नो दैट द वार्निंग सिस्टम हाउ टू यूज द mitigate the disaster system and reduce the less damage of life and properties. Now the structural mitigations. So the non-structural mitigation measure may need to be completed by the structural measurements. In the case of the floods, earthquake regulations, then drains or the bypass channels can be provided where the appropriate to protect the area of damage by the floods. So the non-structural mitigations in case of use. So the technique to mitigate the effect of the earthquake, cyclone and the floods on the structure also exists. So now the engineering structures. So engineering structures involve the agricultures and the engineers during the planning and designing and the constructions of the phases. They may include the buildings ranging in scale from the multi-store office and the dams, ports, road, railway and etc. So the application surrounding the technical principles is achieved through the site planning, then assessment of the force created by the natural phenomena, then planning and analysis of the structures measured to resist such a forces, and design and the proper detailing of the structure components and the constructions with the suitable materials. So now the various institutions, safety and training institutions name in the India. So the first one is the NIDM, the National Institute of Disaster Management, which established in New Delhi. Then National Disaster Management Authority is also established in New Delhi. Then National Disaster Response Force, for example the CISF, BSF, ITBP, is established in the Hyderabad, Chandigarh and Gwalior. Then the program for enhancement of emergency responses, which established the CIF, is established in the Hyderabad and ITBP is established in Chandigarh. Then the National Civil Defence College, Nagpur, which one is established in since the 1957s. The National Fire Service College is established in Nagpur on the 1965s. So today's your assignment questions is given the brief informations about the role of technology in the disaster management and remote sensing. So if any question regarding this topic, you can mail me. If any doubt regarding this topic, you can contact me. My mail ID and the contact number is in your screen. Thank you.